Assalamu alaikum, second year. Welcome to the last lecture of this chapter, operating system. Today our first topic is secondary storage management. Now there are two type of storage devices in your system. One is primary storage and second is secondary storage. Secondary storage is that storage devices are those storage devices in which you store or save your documents intentionally by your own will. While primary storage device are those devices, are that device, I mean RAM, is that device in which without which your computer cannot work, right? आपका जो भी काम है वो रैम पे जाएगा. रैम इज योर वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर. उसे जाना ही है. You can't stop that. But secondary storage devices are those devices जिनमें आप खुद अपना डॉक्यूमेंट सेव करते हो. जैसे हार्ड डिस्क हो गया, आपकी यूएसबी डिवाइस है, सीडी ड्राइव है, आप इसके अंदर खुद अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो फॉर द फ्यूचर यूज. तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं उनको हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ठीक है. नेटवर्क मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स जो कि पूरे एक नेटवर्क के पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करता है. जब एक क्लाइंट सर्वर का नेटवर्क बनता है जिसमें एक सर्वर है, कंप्यूटर मेन कंप्यूटर है, which is responsible for serving all resources of computer to all the client computers of that network. तो उसमें उनको जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं उन सबको मैनेज करना, हर एक कंप्यूटर को, हर वर्क स्टेशन को, हर यूज़र को, हर चीज़ को, हर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, उनके प्रिविलेजेस उनको असाइन करना, उनके यूज़र ग्रुप्स बनाना, उनके नेटवर्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करना, किसी वायरस को डिटेक्ट करना, ये सब मैनेजमेंट काम किसका है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. अच्छा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क मैनेजर नहीं होता. Only server side operating systems are those operating systems which are responsible for network management. आप जो भी विंडोज अपने पर्सनल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, those are for your personal PC, right? Those are not for server environment. For server environment, there are special operating system available in the market. For example, if I take example of Windows, then there was Windows 2012 with Windows 7, right? Server Windows are on server PCs. Operating system was Windows 2012 and 16, and on workstations Windows 7 and Windows 10 work. Now Windows 7 are obsolete, so with Windows Server 2016, uh, client windows are Windows 10, right? So Windows Server 2016 have features of network management. Protection system. Protection system is that function of operating system in which it ensures that privileges given to the user by system administrator are correct, right? It creates account for each user and gives privileges to prevent misuse of the system. Obviously, protection system is for the prevention of the misuse of the systems, for the viruses, for the hacking, security. All these are responsible for this. In Windows 19, protection system is Windows Defender, right? You don't need to have any other antivirus on the Windows 10 if your Windows Defender is active. It is virus protection system given in the Windows 10. Command interpreter is interpreter provides interface between user and the computer system. It is a file in the operating system that reads and executes user commands entered as text through keyboard.
अभी जो आप लोग कमांड्स कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को देते हैं, उनको रीड करना, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाना और उसके बाद आपको उसका एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट देना, ये किसका काम है? ये कमांड इंटरप्रेटर का काम है। प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या चीज है? व्हाट इज अ प्रोसेस? Process is an program in execution. Excuse me. Anything which we provide to computer as an input. For giving an output of that, it requires a process. हमने जो भी इनपुट दी है उसकी आउटपुट हमारे पास आए उससे पहले कंप्यूटर एक प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, तो a process is an program in execution. Like if I am recording this lecture, now a whole system is working, so there is a process behind which is recording my voice with with these slides, right? So computer is in process. Multiple processes execute simultaneously. Obviously मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं कंप्यूटर के साथ, उसने सब कुछ मैनेज करना है। इस वक्त उसने इस सिस्टम को भी मैनेज करना है, उसने पीछे वाले सिस्टम जो आपका सीपीयू चल रहा है उसको भी मैनेज करना है, अगर इंटरनेट ब्राउज हो रहा है उसको भी मैनेज करना है। वो सब प्रोसेसेस एक साथ चल रहे होते हैं। A process in execution needs various resources like input output devices, memory, etc. Obviously अगर आप कोई, अब मैं अगर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो इनपुट डिवाइस यूज हो रही है एज अ माइक और आउटपुट डिवाइस यूज हो रही है एज अ मॉनिटर, और उसके बाद मेमोरी ऑब्वियसली रैम यूज हो रही है। तो ये सब चीजें अगर एक प्रोसेस हो रहा है या मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे हैं तो आपकी सब रिसोर्सेज को जरूरत होती है इनके। Operating system enables all processes to share and exchange information efficiently. ये सब प्रोसेसेस को वर्क में रखता है, एनेबल रखता है ताकि इंफॉर्मेशन इजीली एक्सचेंज हो सके। ये वेरियस स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जब एक प्रोसेस बनता है तो वो इन सब स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, आपने एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने उसे स्टार्ट किया है, बिगन किया है, पहले वो न्यू में आएगा, उसके बाद वो जब उसे आपका कंप्यूटर एडमिट कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो रेडी की स्टेट में आ जाएगा। नाउ इट्स रेडी कि आपका अब जो है ना सीपीयू उसके ऊपर काम शुरू करेगा। अब अगर तो वो डिस्पैच हो गया है, अगर वो सीपीयू के पास चला गया है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा, और अगर वो उसमें कोई इंटरप्ट आ गया है तब भी वो थोड़ी देर के लिए अगर वो रुक गया है, ठीक है, किसी और प्रोसेस को उसने जगह दे दी है, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, वो थोड़ी देर उसने वेट पे लग गया है, फिर उसके बाद जब वो वेट खत्म होगा, इंटरप्ट खत्म होगा। इंटरप्शन क्या होती है? अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से आपका काम डिले हो जाता है, ठीक है, उसको इंटरप्ट कहते हैं। आप डेली लाइफ में इंटरप्ट और इंटरप्शन की जो है वो टर्म यूज करते हो। अगर आपका प्रोसेस थोड़ी देर के लिए किसी वजह से रुक जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, तो उसके इंटरप्शन जब खत्म होती है तो वो फिर रनिंग स्टेट में चल जाता है, मतलब उसकी प्रोसेस के ऊपर काम खत्म करना, काम होना शुरू हो जाता है। अब अगर काम कंप्लीट हो गया यहीं से तो वो एग्जिट होकर टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं तो वो ब्लॉक स्टेट में भी जा सकता है। ब्लॉक स्टेट में क्या है कि उसके ऊपर रनिंग स्टॉप हो गई है, कोई वायरस आ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो ब्लॉक स्टेट में चला गया, फिर उसकी अनब्लॉकिंग होती है तो वो फिर रनिंग स्टेट में आता है। ठीक है, ये आपकी बुक में एक एक चीज एक्सप्लेन्ड है। थ्रेड एंड प्रोसेस, इट इज द नेक्स्ट टॉपिक। What is a process? I told you, a process in an instance of a program that is being executed. A process may be made up of multiple thread. अब एक process के अंदर multiple threads हो सकते हैं। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आता है तो वो क्या होता है? वो प्रोसेस में होता है, और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, a thread is a basic ordered sequence of instructions within a process that can be executed independently.
अब वो थ्रेड क्या है, वो आपके प्रोसेस का एक हिस्सा है, ठीक है, प्रोसेस का एक हिस्सा है। इन दोनों कंपैरिजन देख लेते हैं। An executing instance of the program is called a process। जो आपका executing instance है, जो इस वक्त आपका काम हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, process। A thread is a subset of the process। अब अगर एक process execute हो रहा है तो उसके parts क्या है, thread है, और एक process multiple threads से बनता है। It has its own copy of the data segment of the parent process। It has direct access to the data segment of its process, ठीक है। Any change in the process does not affect other processes। अब एक प्रोसेस के जो अफेक्ट है, अगर एक प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं ना, तो अगर आपका एक प्रोसेस के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उससे दूसरे प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Any change in the thread may affect the behavior of the other threads of the process। अब बात क्या है कि एक प्रोसेस आपका मल्टीपल थ्रेड से बना हुआ है, प्रोसेस इंडिपेंडेंट है। अगर 10 प्रोसेस चल रहे हैं तो एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस, उनका आपस में कोई इंटरलेक्ट नहीं है। लेकिन जो आपके एक प्रोसेस के अंदर अगर 100 थ्रेड्स हैं तो वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो प्रोसेस तो एक ही है, ठीक है, प्रोसेस तो एक ही है। अब अगर एक थ्रेड में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे किस पे असर होगा, आपके प्रोसेस के बिहेवियर पे असर होगा, ठीक हो गया। अब आपकी एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास एक रूम में बैठी हुई है, दूसरी क्लास दूसरे रूम में बैठी हुई है। एक क्लास को एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरे क्लास को दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। उन दोनों क्लासेस का आपस में कोई लिंक नहीं है, उनका अलग अलग काम चल रहा है। एट अ टाइम स्कूल में कई क्लासेस हो रही हैं, सबका अपना अपना एक सेशन है, लेकिन एक क्लास के इज मेड अप ऑफ comprises many students, ठीक है। एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अगर एक स्टूडेंट कोई मसला करता है तो आपकी सारी क्लास डिस्टर्ब होती है। इसी तरह प्रोसेसेस क्या है, वो आपकी क्लासेस हैं, और थ्रेड्स क्या है, आपके स्टूडेंट्स हैं। समझ आएगी बात। प्रोसेसेस कैन रन इन सेपरेट मेमोरी स्पेसेस, threads run in separate shared memory spaces। obviously जब एक प्रोसेस एक जगह पे है, अगर एक क्लासरूम है उसकी एक अपनी जगह है, दूसरा क्लासरूम है उसकी अपनी जगह है, इसी तरह एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी के एक स्पेस पे शेयर हो, एक स्पेस पे चल रहा है, दूसरा दूसरे पे चल रहा है, लेकिन जो थ्रेड है वो उसी मेमोरी, उसी क्लासरूम की स्पेस को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस के अंदर है। Process is controlled by the operating system. Threads are controlled by a programmer in a program. Processes are independent, threads are dependent. Threads are dependent on processes, और process तो independent है क्योंकि वो अलग-अलग काम कर रहे हैं। Next is multi-threading। The process of executing multiple threads simultaneously is known as multi-threading। जब एक प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ थ्रेड्स हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो ऑब्वियसली वो सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, multi-threading। It is an execution method of a program that allows a single process to run multiple threads at the same time। Its purpose of multi-threading is to provide simultaneous execution of two or more parts of a program to maximum utilize the CPU time। Multitasking क्या है? It is the function of operating system that loads multiple programs in main memory and executes them at the same time by rapidly switching CPU among them। but task क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है कि मुख्तलिफ काम जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने खोल लिए हैं, और वो सीपीयू हमारा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को स्विच करता रहता है। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। In multi-programming, many programs are loaded in memory, but the CPU only executes one program at a time. It saves user time in loading the programs to main memory and runs the program quickly. Multiprocessing is the ability of an operating system to execute more than one process simultaneously on a multiprocessor machine। ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं इसको। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह जब आप क्लास में आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे, सेकंड चैप्टर को भी और फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को भी। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।